So this video is going to be about none other than Paytm. And recently, last year actually, Paytm का IPO launch हुआ था और उस IPO launch के बाद single day में it was the biggest IPO that was launched, and by the end of the day, it dropped by around 27%, which is the biggest drop in the price of stock on the day of IPO ever. And a lot of people basically attribute it to Paytm का business model. Paytm का business model ही चूतिया है guys. That's what people say. कि तो आज हम वही फिगर आउट करेंगे इस वीडियो में कि क्या सीन है पेटीएम का, क्या सीन है उनका बिजनेस मॉडल, वर्केबल है कि नहीं, कर क्या रहे हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मोस्ट प्रॉब्ली वी विल नॉट कम टू अ कंक्लूजन, बट आई एम श्योर यू विल have a little more clarity than you had about Paytm as of today. So let's begin. Cool. So I did a bit of my research. मैंने अपनी research करी जैसे मैं हमेशा करता हूँ. And instead of taking you to like a lot of different kinds of article, I figured out one article that is really, really awesome and covers almost everything that we need to know for the sake of this video. So what I will do now is I will just share my screen. एंड मैं आपको रन थ्रू करूंगा उस आर्टिकल के साथ. उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ट्विटर पे थोड़ा जाएंगे, चेक करेंगे क्या चल रहा है. शायद जाएंगे ट्विटर पे अगर जरूरत पड़ी तो. व्हाट डू पीपल हैव टू से अबाउट पेटीएम्स आईपीओ और पेटीएम स्टॉक प्राइसेस. बट स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पहले हम देखेंगे पेटीएम ने लास्ट ईयर जो अपने स्टॉक्स लॉन्च किए थे या आईपीओ लॉन्च किया था, उसके बाद से उनके स्टॉक प्राइसेस के क्या हाल रहे हैं. जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Hello. Yes, you can hear me. I thought for a second that you were not able to hear me. Just a second. Just a second. Just a second. All right, all right, all right. So basically जब स्टार्ट हुआ तो 1560 रुपए का एक शेयर था पेटीएम का, which was apparently the biggest opening of shares in the market, and it went up like it always does, and it went up to 1782 rupees, and then since then it has crashed like nothing else, and it managed to hit a rock bottom somewhere in March, around 25th March is what it's saying is when it hit the rock bottom. और फिर 13 मई को उसने रॉक बॉटम किया और तब से थोड़ी सी ग्रोथ दिखानी शुरू करी है. सो एक तो ये चीज हो गई कि भाई इनका तगड़ा ड्रॉप हुआ है. दिस इज लाइक अ 300, basically a 200% drop on their initial price at which they started offering the stocks. But let's check out uh, what does other media have to say about it. So this doesn't look good to begin with. So as somebody who is an investor and is looking into this, probably it's also a good opportunity to buy Paytm stock. So you can think about it. Paytm, give me a sponsor. I know it's just my third video. I don't have enough subscribers. So if you're not a subscriber, subscribe to my channel. I'm really sorry for such a bad call to action, but I'm new to this, so I can be forgiven, right? So cool. Let's move to the article that I was talking about. Oh, okay. So this article is by the Strategy Story. I have not really done any background check on them, but this article, what I can vouch for is the fact that this article is being referred by a lot of people, which essentially means that it has some authenticity. And yeah, it answers the questions that we are looking for in a really, really good way. Also, check these guys out because we are using their material. So definitely check these guys out. Follow them on Twitter, follow them wherever they are. And yeah, let's begin. How does Paytm make money? How does Paytm make money? So basically, I will not run you through each and everything in this article. Obviously, I will not do that. I will share the link of the article in the description, so you can just go through it. So essentially, it says that essentially there are two aspects of Paytm's business. Firstly, Paytm for consumers, and then Paytm for businesses, which is simple, quite simple to understand. Okay. So in terms of consumers, how does Paytm make money? Firstly, पहली चीज payments. Payments में peer-to-peer money transfer you can do on Paytm. peer to peer money transfer कर सकते हो, online payments कर सकते हो, in store payments कर सकते हो. Paytm, I thought my cat is here. Anyway, Paytm, just like other recharge service providers, charges commission on various
from various operators such as DTH service provider, mobile operators, etc., etc. And they also have incentivized recharging through various cashbacks and offers. Okay, they give cashbacks, which essentially makes you recharge your mobile phone on Paytm. Paytm में आप रिचार्ज करते हो, और जैसे आप Paytm में रिचार्ज करते हो और 100 रुपए का रिचार्ज किया तो शायद 5 रुपए Paytm लेके जाता है या 10 रुपए Paytm लेके जाता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या डील हुई है एयरटेल के साथ, जियो के साथ, या जो भी आपका सब्सक्राइबर है, नहीं, जिसको भी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, जिसका सिम कार्ड आप यूज कर रहे हो. सो yeah, next is commerce, which includes Paytm Mall. Okay, Paytm Mall still existed. I had absolutely no clue about it. Along with ticketing services such as movies के टिकट खरीद सकते हो, flights खरीद सकते हो, ट्रेन की टिकट खरीद सकते हो. Paytm entered the movie event ticketing market, whereas when the Book My Show was the primary player. It provided good competition, charging lesser convenience fee. Foray into these areas, it competes with niche players such as Make My Trip and Yatra. तो बुक माई शो के साथ compete करता है वो इवेंट टिकटिंग में, और यात्रा और मेक माई ट्रिप के साथ वो फ्लाइट होटल बुकिंग टिकटिंग में compete करता है. एंड इट बेसिकली कीप्स द कन्वीनियंस फी को काफी कम रखता है, जिस वजह से लोग वहां पे अट्रैक्ट होते हैं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपनी टिकट्स कभी भी पेटीएम से बुक नहीं करता, और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड आई कैन टेल यू दैट मैं कभी यूज नहीं करता. आई यूज एमएमटी, आई यूज गोआईबीबो, समटाइम्स आई यूज booking.com, and sometimes if I'm traveling for leisure then I go for Airbnb. इसके बियॉन्ड मैं कभी जाता नहीं, और आई डोंट थिंक कोई भी बुक करता है टिकट. मतलब मैं तो नहीं जानता किसी को जिसने पेटीएम से एक्चुअली में अपनी होटल टिकट बुक करी हो. फ्लाइट टिकट मैंने सुना है, एक्चुअली 2 फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि हैं कंजूस, मक्खी चूस. एनीवे, सो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू पैसे बनाता है. फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या है? पेटीएम आल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज क्रेडिट कार्ड देता है, सेविंग्स अकाउंट देता है, इंश्योरेंस देता है, एक्सेट्रा. ये सारी चीजें आपको देता है. सिंस मोस्ट ऑफ दीस प्रोसेसेस सच एज अकाउंट ओपनिंग, वेरिफिकेशन कैन बी डन डिजिटली, पेटीएम गेट्स बूस्ट. ठीक है, कूल. सो बिकॉज सबके मोबाइल फोन में ऑलरेडी पेटीएम एग्जिस्ट करता है, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड देना बहुत आसान हो जाता है. लोगों का केवाईसी करना भी बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी पेटीएम ने मोस्ट ऑफ द केवाईसी करे होते हैं. अगर नहीं करे होते हैं तो वो बहुत आसानी से कर लेता है, बिकॉज उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. लोगों के फोन में वो ऑलरेडी हैं. ऑल दे नीड टू डू इज गिव पीपल अ प्रॉम्प्ट to take a credit card from them. And from what I know, it doesn't have very stringent rules on कि भाई क्रेडिट कार्ड कैसे दे, किसे देना है, क्या देना है. मतलब बहुत आसानी से पेटीएम का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है. मेरे को तो बहुत ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं पेटीएम के क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो. अगर आपको भी आ रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बट मेरे पास तो आ रहे हैं, तो शायद अगर मैं ही हूं अकेला तो मतलब आई फील ग्रेट. एनीवे, नेक्स्ट इज पेटीएम फॉर बिजनेसेस. सो बिजनेसेस को चार्ज करके वो पैसे कमाता है. कैसे कमाता है? सबसे पहली चीज, कंज्यूमर पेमेंट्स. इट फैसिलिटेट्स वेरियस मर्चेंट टू एक्सेप्ट फ्रॉम द कंज्यूमर्स. ठीक है, सो मर्चेंट्स के लिए पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करता है. मतलब बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि वो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सके. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स इंक्लूड पेमेंट गेटवे, लिंक्स, यूपीआई पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, I've used Paytm's online payment gateway and it's really good. I definitely would suggest you to go for it. Also, something that's missing here जो यहाँ पे नहीं है, वो 20,000 तक की पेमेंट मतलब विदाउट इवन केवाईसी भी लेने देते हैं. तो अगर आप पेटीएम में जाते हैं और पेटीएम में एक मर्चेंट अकाउंट स्टार्ट करते हैं, एक पेमेंट गेटवे अकाउंट स्टार्ट करते हैं, पहले एक्चुअली आपको मर्चेंट अकाउंट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत आसानी से अप टू 20,000 का पेमेंट कलेक्शन की अथॉरिटी राइट अवे आपको मिल सकती है. तो अगर आपको पेमेंट कलेक्ट करना है, इमीडिएटली कलेक्ट करना है, और वो पेमेंट 20,000 से कम है, तो आप पेटीएम को यूज कर सकते हैं. बाय द वे, जस्ट प्लगिंग इन पेयू एज वेल. पेयू गिव्स यू दिस payment collection limit of around 40,000 without any केवाईसी वेरिफिकेशन, बिकॉज केवाईसी वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कई बार वो अटक भी जाता है क्योंकि मैनुअली अप्रूव किया जाता है मोस्ट ऑफ द पेमेंट गेटवे में जो केवाईसी का प्रोसेस है. नेक्स्ट इज बिजनेस पेमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर. दीज इंक्लूड पे आउट के टाइम कुछ पैसे काटता होगा ऑब्वियसली. ठीक है, नोडल अकाउंट्स, पॉस बिलिंग. पॉस इज पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग. मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे पेटीएम का वो आपको दिखाई देता है, तो वहाँ से जब भी आप पेमेंट करते हो तो कुछ पैसे पेटीएम भी लेके जाता है. उसके अलावा एडवर्टाइजिंग भी करता है. अच्छा हाँ, और ब्रांड्स को प्रमोट करता है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू. डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास ऑलरेडी है. एंड देन बिजनेस खाता. आई डोंट नो व्हाट बिजनेस खाता इज, सो लेट्स गूगल व्हाट बिजनेस खाता इज. पेटीएम बिजनेस खाता क्या है ये? अच्छा, ठीक है, कूल. तो अगर आप खाता बुक को जानते हैं, खाता बुक व्हाट इट डज कि बेसिकली वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, उनकी जो गो टू मार्केट था वो था कि स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए उन्होंने या एक मतलब सब्जी वाले के लिए या सिगरेट वाले के लिए, टपरी वाले के लिए, इन सब के लिए इन्होंने एक वो बनाया, खाता बुक बनाया, एक रिकॉर्ड
मतलब बेसिकली उनको उधार को रिकॉर्ड करने का एक टूल बनाया। उन्होंने खाता बुक बोला उसे। इट्स अ स्टार्टअप दैट इज बैक्ड बाय वाईसी। पेटीएम apparently does the same thing for these small merchants and probably charges them money for that. I don't know, it's not really. These are activities that provide ease of business to merchants. Merchants no more have to get into technical nuances of these processes. अच्छा, तो बेसिकली अभी के लिए आप क्या पेन पेपर में लिख के करते हो? अगर आप छोटे बिजनेस ओनर हो तो आप पेन पेपर में लिख के अपने उधारों को ट्रैक करते हो। बट अभी इन्होंने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको टाइमली रिमाइंडर्स मिल सकते हैं, आपका जो कस्टमर है उसके पास भी टाइमली रिमाइंडर्स जा सकते हैं और आपका काम आसान हो जाता है एज अ बिजनेस ओनर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज। मच लाइक इन द कंज्यूमर सेगमेंट, पेटीएम ऑफर्स मेनी ऑफ द सेम सर्विसेज टू बिजनेस यूजर्स। ठीक है, फ्रॉम सैलरी अकाउंट्स, अच्छा सैलरी अकाउंट्स खोलते हैं, बेनिफिट्स टू पेंशन, अच्छा पेंशन बेनिफिट्स देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कराते हैं, पेटीएम गोल्ड। पेटीएम ट्राइज इट्स बेस्ट टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ मनी। ठीक है, लोन्स एंड इंश्योरेंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी सर्विसेज। तो बेसिकली सब कुछ करता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी Paytm does it. I don't know how good they are at it, because there are individual organizations, individual startups, individual companies that are trying to do the same thing, and I'm sure they're doing it much better than Paytm, because simply because ki bhai, they have more focus. They're focused on working on just one thing, wherein Paytm is trying to get into 10 different kinds of verticals. Apparently they're working. I am not sure. I haven't heard of quite a few things that are listed here. तो कह नहीं सकते, बट ठीक है, मान लेते हैं इन्होंने लिखा है तो कुछ करता तो होगा ही, करता तो होगा ही, एटलीस्ट पीआर तो करा ही होगा उन लोगों ने। काम कितना करता है ये नहीं पता। जैसे इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट का है ना कि स्टार्टअप ग्रांट, और ये वो मिलता नहीं है कभी किसी को, आपको आपको खिलाना ही पड़ता है पैसा, तभी आपको मिलेगा। तो पीआर बहुत है उसका, सबको पता है, अच्छा स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप ग्रांट है, बट पैसा मिलता, मैं तो नहीं जानता किसी को मिला हो पैसा। और मैं काफी सारे ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो कि इनसाइडर हैं, जो कि स्पेस में लाइक स्टार्टअप इंडिया के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, बट फिर भी मेरे आसपास के लोगों को कभी भी ग्रांट नहीं मिला। आई माइट बी रॉन्ग, ओके, सो you don't have to believe that that is true for sure. Let me know if I'm wrong in the comments below. That was a good plugin, right? Cool. So next is developer services. These include API services and Paytm AI. To elaborate a bit, API is common language for software. ठीक है, cool. Imagine you are making a buying something from a website. अच्छा, imagine you are buying something from a website. There are two entities here, website and your bank. ठीक है, API facilitates the exchange between, सिंपल है। ठीक है, and PAI is Paytm's fraud management system. Obviously, they must be having a very extensive fraud management system, and they're processing so many payments on a regular basis. I'm sure this must be adding a lot of value. In fact, यहाँ पे कहीं लिखा था, एक second, let me find out. 4,000. Not able to find out. कहीं लिखा था अराउंड 4,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता है पेटीएम एक साल के अंदर, विच इज अ ह्यूज नंबर। अच्छा, तो रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखना चाहें तो भाई पेटीएम का फाइनेंशियल सर्विसेज, पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो B2C वाला एस्पेक्ट है, उससे 75% रेवेन्यू उनका वहीं से आता है, और 25% जो रेवेन्यू है वो बेसिकली B2B वाले स्पेस से आता है, मेनली कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, पेटीएम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर इट्स पेमेंट सर्विसेज पेटीएम प्राइमरीली जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम, अच्छा ट्रांजैक्शन फी लेता है, ठीक है, पेटीएम चार्जेस, ठीक है, कंज्यूमर कन्वीनियंस फी लेता है, ठीक है, रिकरिंग सब्सक्रिप्शन फी लेता है फ्रॉम मर्चेंट्स। ठीक है, cool. For financial services, Paytm generate revenue depending on the type of services offered and through its financial institution partners. ठीक है, the product type. Paytm revenue depend on the product, nature of the partnership and level of involvement. तो basically mainly for ये B2B का केस में है, डिपेंडिंग ऑन क्या उनकी डील स्ट्राइक होती है उनके फाइनेंशियल पार्टनर्स के साथ, जो कि लेंडिंग, इंश्योरेंस की सर्विस या वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस दे पाते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट पेटीएम पैसे लेता है, बट दैट इज नॉट क्लियर हियर। उन्होंने एक्जैक्टली नहीं बताया कि कोई फिक्स नहीं है, कुछ डिफाइंड वो नहीं है कि अगर भाई लेंड कर रहा है तो 1% जितना भी लेंड हुआ है उसके अमाउंट का उसे मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर इट्स लेंडिंग बिजनेस थ्रू इट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स, पेटीएम अर्न्स अ सोर्सिंग फी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टनर। अच्छा, लोगों को लेके आने के ऑब्वियसली पैसे लेगा, बिकॉज उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू लीड जनरेशन हो रही है, विच इज टिपिकली अर्न एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल ऑफ लोन। तो जब लोन डिस्पर्स हो जाता है आपको, तब उसका एक परसेंटेज अमाउंट पेटीएम लेके जाता है। कलेक्शन फी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द लोन। ठीक है, कूल। तो कलेक्शन भी पेटीएम के थ्रू होता है, और जब आप कलेक्ट करते हो तो भी उसका एक छोटा सा अमाउंट पेटीएम लेके जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स देता है। आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फॉर इट्स इक्विटी ब्रोकिंग सर्विसेज, पेटीएम अर्न्स कंज्यूमर फीस सच एज अपफ्रंट अकाउंट ओपनिंग फी। अच्छा, तो आप बेसिकली स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रांजैक्शन फी डिपेंड ऑन ट्रांजैक्शन टाइप, वॉल्यूम्स एंड, ठीक है, गॉट इट, परफेक्ट।
2019 में अगर हम उनको देखें तो भाई 3,500 करोड़ का उन्होंने धंधा किया, 7,000 करोड़ का उन्होंने बर्न करे। 2020 में उन्होंने 3,500 रुपए का धंधा किया। एक्चुअली रेवेन्यू कम हुआ बट बर्न भी कम हुआ, तो बर्न कम दिखाया भाइयों ने। 2021 में जब उन्होंने लॉस जब उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया तो उन्होंने फिर से वही किया, अपना बर्न कम दिखाया और रिलेटिव डिक्रीज इन रेवेन्यू भी कम दिखाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अ कंपनी लाइक पेटीएम, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को बहुत ज्यादा विश्वास होता नहीं है कि कितने ट्रू है ये नंबर्स, बट आई एम श्योर बहुत ज्यादा इसके पीछे बेटिंग हुई होगी। मस्ट दे मस्ट हैव हायर्ड अ थर्ड पार्टी टू, आई एम श्योर आईपीओ के प्रोसेस में होता है ना, आई थिंक, आई गेस थर्ड पार्टी आपको हायर करनी पड़ती है जो कि सारी इंफॉर्मेशन को वेट करता है, एंड देन दैट्स व्हेन द आईपीओ गेट्स लॉन्च। सो आई एम अज्यूमिंग दैट द आईपीओ प्रोसेस, the SEBI's IPO process is robust enough to ensure कि भाई these numbers are correct. So depending, like assuming that is the case, let's move on. Cool. So let's talk about the IPO launch. सिर्फ एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा. On November 18, 2021, the shares began trading at 1950. अच्छा 1950, तो यहाँ पे गलत क्यों दिखा रहा है? गूगल में ये गलत क्यों दिखा रहा है? एक सेकंड. ठीक है, गूगल में क्या दिखा रहा है? एक सेकंड यार. पेटीएम शेयर, ये तो एक दिन का चू, लंबा बता लंबा. मैक्स देख लेते हैं. मैक्स जब से इन्होंने स्टार्ट किया है, लास्ट ईयर ही तो लॉन्च किया है, लास्ट ईयर से थोड़ी पहले होगा. नवंबर 18 नवंबर को इन्होंने लॉन्च किया है. अब 1560 रुपए. अच्छा, तो प्री लॉन्च इनका 19 वो हो गया था. प्री लॉन्च इनका जो प्राइस था एनएसई में एक स्टॉक का, वो था 1950. दिस वाज 9.5% बिलो द अपर बैंड ऑफ आईपीओ प्राइस रेंज. अच्छा, 2,000 का उन्होंने बोला था क्या? अराउंड 2,000 बोला होगा, इसलिए 10% कम था, अराउंड 10% था. एंड इट क्लोज्ड एट 27% लो एट 1560, एंड हेंस यहाँ पे वो 1560 दिखा रहा है. गूगल पे वो 1560 दिखा रहा है. दिस वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द लिस्टिंग डे इन इंडियन आईपीओ हिस्ट्री. अच्छा. अच्छा. So why is the case? Why is that a case? So one of the issues that may have happened is its complex business model, which may have failed to appeal to retail investors. Paytm will explain. अच्छा, विजय शेखर शर्मा का एक स्टेटमेंट है जो कि आई एम श्योर कि अभी एक साल के अंदर ही आया होगा. Paytm will explain its business model better and to more people. Its business model is not a point business model. Paytm acquire a customer for A, then A makes some money, while more money is made on a derivative of A, which are B, C, and D. And then there is an opportunity for E, F, G. It is an A to G business model, which is a long number of things to be understood. Because stock markets in India haven't seen anything like this. This it is what it is. I wish Paytm could have explained this to a larger audience. ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई हमारा बिजनेस मॉडल नहीं समझ पाया कोई. मेरे को इनका ये एनालॉजी तो अभी भी नहीं समझ आई है. अगर आप ऐसे समझाओगे तो घंटा ही समझ आएगा दुनिया को ना. Paytm's ambitions to become super app and be present in every business have come at a cost. Generally, retail investors like to invest in leaders or monopolies in their respective categories. Now, if you do, जैसे मैं पहले बोल रहा था, वो सबसे लड़ रहे हैं. वो मेक माई ट्रिप से भी भसड़ मचा रखी है उन लोगों ने आईआरसीटीसी के साथ भी भसड़ मचा रखी है, मेक माई ट्रिप के साथ भी भसड़ मचा रखी है, गोवा के साथ भी भसड़ मचा रखी है. तो सभी उनके कॉम्पिटिटर है. दुनिया पेटीएम की कॉम्पिटिटर है बेसिकली. ठीक है, नाउ इफ यू कैन डू a simple exercise. Take a few products of Paytm, think of other players in that category. You'll find one or two major niche players in every segment, which is an issue. It makes Paytm jack of all trades, exactly, and master of none. ठीक है. Its approach has always, अच्छा, विजय शेखर शर्मा की एक और स्टेटमेंट पढ़ा जाए. अगर मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ तो प्लीज बता देना, कमेंट में बताना, कमेंट्स में. ठीक है. Its approach has been expanded on its platform exactly in the direction that the consumer is in. Paytm is not talking about us being identified as only one line item business. Paytm are like an ice cream sundae, which you can have in multiple flavors of business, and different businesses feed into other businesses to expand. ठीक है, कूल. तो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग आइसक्रीम संडे हैं, हमारे ऊपर जो फ्लेवर डालोगे वो हम बन जाते हैं. तो हमारे पास बेसिकली अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है, हम जो बिजनेस लेके आएंगे वो चलेगा. विच आई डोंट थिंक इज, पर्सनली, it's a red flag for me. As as delicious as the above statement sounds, do keep in mind one unfavorable flavor can take the entire dessert. ठीक है, and that is the catch of trying to be a super app.
Numbers speak better than anything else, and this date in this data savvy world, and it is numbers that Paytm is banking upon to prove its metal. What does Paytm want to become in the future? Future में क्या बनना है? ठीक है, Paytm's long-term revenue growth and increase in GMV are dependent on its ability to retain, acquire new users to its platform. Paytm has attracted merchants on its platform by offering full suite of payment services. पूरा suite of payment services दे दिया है, and technology solutions to grow their business and Paytm share of payments. ठीक है, one more merchant being a part of its ecosystem, Paytm, with more merchants being a part of its ecosystem, Paytm offered more use cases to its consumers, increasing the number of transactions on the platform. As of March, Paytm has 21.1 million merchants on its platform, which they've done. So one thing they've done really, really well is that they have expanded like anything. They have a footprint which is commendable. That is one really good job that they have done. If you haven't noticed already, Paytm wants to become a super app. It offers a plethora of services from bill payments to movie tickets, from insurance to POS billing software, basically almost everything in financial space, both from a consumer and a business point of view. Generally, wherever an app or an entity does this, it indicates there is a need for user acquisition and retention. Think Amazon or Flipkart. Okay. Now going back to the earlier point, what does Paytm intend to do with all the information from its transaction? To elaborate, every transaction made on Paytm says something about their user. Acha. When you have this amount of big data, you can use this information for other purposes such as lending money and targeting advertisements. ठीक है, मतलब basically data बेच के वो कमा रहा है. Right now, the entire lending industry, a huge right now, or the entire lending industry, a huge issue is NPAs. It is because of the reason that RBI hugely regulates the lending industry. ठीक है, but wouldn't be wonderful if you already have a way to know if the consumer will pay you back or not? अच्छा, so Paytm knows that, okay, what is my potential to pay you back, which makes it fair. So ये सारे point मेरे को सब सही लग रहे हैं, but इतनी सारी चीजें करेगा तो होगा कैसे? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा. But at the end of the day, this article doesn't give us anything, says anything with conclusion. It essentially warns us about a lot of things. It tells us that there are a lot of things that Paytm is doing, but is not able to give any direction, conclusive direction. And I think we shouldn't come to a conclusive direction. ठीक है, cool. So अब देखते हैं what's Paytm's plan for profitability. ज़्यादा deep में नहीं जाएंगे. Profitability. Cool. I came across a few articles. I think it's more of a PR thing by Paytm. It says that Paytm will be operationally profitable by next September. So next year by September, Paytm is aiming to be profitable, and I think this is more of a PR move for them to get more people to invest in their stocks. However, who am I to judge? Do I even have like 1,000th the size of a business? No, but I am a potential shareholder of Paytm. And from that lens, if I look at it, I wouldn't want to put any money in Paytm. There are a lot of very, very good stocks that I would definitely want to put money in. But again, I am no experts in share market investments. So don't take this advice. Talk to a proper expert and they'll be able to tell you. But based on my limited understanding of basic understanding of how businesses are run, I don't think this will work. So on this note, I'll have to close this video. I'll close this down. A few friends of mine are over, so I'll go check them out. I'll say hi to them. I hope you're also having a wonderful, wonderful day. I hope you like this video. I know I'm not going into a lot of depth in terms of research, but I don't think we need to know about everything in depth. We need to have like an idea of how it's, you know, most of the businesses are operating. So if this gives you a decent idea of what Paytm is doing, like how Paytm is making money and what are the different kinds of consumers that they cater to, why are they not performing really well in the market? Here's the reason: it's not profitable, though it's basically showing like a stable revenue, even though their costs are declining, but still it's not profitable at the time of IPO, and it, based on what I have heard from a few expert friends that I have, it doesn't even have a robust plan on how it wishes to become profitable. Paytm's argument to that is कि लोगों को समझ ही नहीं आया भाई हमारा बिजनेस मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स है ना, तो लोगों को समझ नहीं आया. बट यार लोग इतने भी क्यों नहीं है ना, लोगों को पता है, मतलब बेसिक्स ऑफ बिजनेस तो पता ही है. आप मेक माई ट्रिप से भी कम्पीट कर रहे हो, आप गोआईबीबो से भी कम्पीट कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप लैंडिंग प्लेटफॉर्म से भी कम्पीट कर रहे हो, आप बैंक से भी कम्पीट कर रहे हो, तो सबके साथ कम्पीट कर रहे हो और वो लोग एक एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल डू अ बेटर जॉब ऑफ डूइंग दैट.
really well. So let me know what you guys think about this in the comments below. And yeah, let's have a conversation, guys. Thank you so much. Have a good day.